जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सः। यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो यह तेरी भूल है। क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत बलवान और सूक्ष्म है, वह है आत्मा। जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है। तभी तक इंद्रियां, मन और बुद्धि को धोखा देकर सबको उल्टे मार्ग में घसीटता है। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं। मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं, और यह सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। इसीलिए कठोपनिषद में कहा है कि जिसका बुद्धि रूपी सारथी विवेकशील है, मन रूपी लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इंद्रिय रूपी घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों की भांति वश में होते हैं। तथा ऐसे मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला पवित्र आत्मा मनुष्य उस परम पद को पाता है, जहां जाकर वह वापस नहीं लौटता। The sense organs are subtler than the organs of action. Our mind controls and orders our sense organs, and in that capacity we know that the mind is subtler than the indriyas. The intellect is conceived of as subtler than the mind, as it has a greater pervasiveness in us than the mind. That which lies beyond the intellect is explained here as the supreme, the Atman. The consciousness in man, which lights up the very intellectual ideas in him, must necessarily be subtler than the intellect itself. In the Upanishad, it has been finally declared that there is nothing subtler than the Atman. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കാമത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിനപ്പുറമാണെന്നും ശ്രേഷ്ഠവും ശക്തവുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനസ്സുണ്ട്, മനസ്സിനപ്പുറം ബുദ്ധിയുണ്ട്. ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശക്തവും സൂക്ഷ്മവുമായത് ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന് ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം അത് സ്വന്തം കഴിവുകൾ മറന്നുകൊണ്ട് അവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തുടരുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും വഞ്ചിക്കുകയും എല്ലാവരെയും തെറ്റിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് വലിച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അനുകൂലമാക്കുന്നു. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ബുദ്ധിയെ അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിനെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശക്തമാണ്, ബുദ്ധി മനസ്സിനേക്കാൾ ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കഠോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്: ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള തേരാളി വിവേകശാലിയും മനസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള കടിഞ്ഞാൺ നിയമാനുസൃതം തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള കുതിരകൾ മികച്ച കുതിരകളെപ്പോലെ തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമുള്ള ശുദ്ധമായ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ ആ പരമോന്നത സ്ഥാനം നേടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയതിനു ശേഷം അയാൾക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం: ఇంద్రియములను నిరోధించి కామరూప శత్రువును చంపే శక్తి నాకు లేదని నీవు భావిస్తే అది నీ పొరపాటే. ఎందుకంటే ఈ శరీరం కన్నా వేరే ఇంద్రియములు శ్రేష్టమైన బలవత్రములు మరియు సూక్ష్మమైనవే. కానీ ఈ ఇంద్రియముల కన్నా మనసును మించి బుద్ధి బలమైనవి.
బుద్ధి కన్నా కూడా అత్యంత బలమైనది సూక్ష్మమైన ఆత్మ. ఎప్పటి వరకు బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియములపై జీవాత్మకు ఆధిపత్యం ఉండదో, అతడు తన సామర్థ్యమును మరిచి వాని ఆధీనమై ఉంటాడో, అప్పటి వరకు ఇంద్రియములు, మనసు, బుద్ధులను మోసగించి అన్నిటినీ బలవంతంగా అపసవ్య మార్గంలోకి ఈడ్చుకుపోతాయి. అనగా ఇంద్రియములు మొదట మనసుకు విషయ సుఖ ప్రలోభం అందించి దాన్ని తన అనుకూలంగా మార్చుకుంటుంది. తర్వాత మనసు, ఇంద్రియములు కలిసి బుద్ధిని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటాయి. పిమ్మట ఇవన్నీ కలిసి ఆత్మను కూడా తన ఆధీనం చేసుకుంటాయి. కానీ వాస్తవానికి ఇంద్రియముల కన్నా మనసు, మనసు కన్నా బుద్ధి బలమైంది. బుద్ధి కన్నను మిగిలినవన్నిటికన్నాను కూడా ఆత్మ బలమైంది. అందుచేతనే కఠోరోపనిషత్తులో ఎవని బుద్ధి రూప సారథి తెలివైన వాడో, మనస్సు అనే కళ్ళెము ఎవని క్రమశిక్షణ అనుసరించి అతని ఆధీనంలో ఉంటుందో అట్టివాని ఇంద్రియములనే గుర్రములు శ్రేష్టమైన గుర్రముల వలె అతని వశమై ఉంటాయి. అంతేగాక అటువంటి మనసు, బుద్ధి మరియు ఇంద్రియములు గల పవిత్ర ఆత్మ గల మానవుడు ఆ పరమపదమును పొందగలడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఇక తిరిగి రాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. जर तुम्हाला असे वाटत असेल की माझ्यात इंद्रियावर नियंत्रण ठेवून वासनेच्या रूपातील शत्रूला मारण्याची शक्ती नाही, तर ही तुमची चूक आहे. कारण इंद्रिये या शरीराच्या पलीकडे श्रेष्ठ, बलवान आणि सूक्ष्म आहेत असे म्हटले जाते. आणि इंद्रियांच्या पलीकडे मन आहे आणि मनाच्या पलीकडे बुद्धी आहे. आणि जे बुद्धीपेक्षा अधिक शक्तिशाली आणि सूक्ष्म आहे ते आत्मा आहे. जोपर्यंत आत्म्याचे बुद्धी, मन आणि इंद्रियांवर प्रभुत्व होत नाही, तोपर्यंत तो त्यांच्या नियंत्रणाखाली राहतो आणि स्वतःच्या क्षमता विसरून जातो. तोपर्यंत इंद्रिय, मन आणि बुद्धीला फसवतात आणि सर्वांना चुकीच्या मार्गावर ओढतात. म्हणजेच इंद्रिय प्रथम इंद्रिय सुखांनी मोहित करून मनाला अनुकूल बनवतात. मन आणि इंद्रिय मिळून बुद्धीला अनुकूल बनवतात आणि ते सर्व मिळून आत्म्याला त्याच्या नियंत्रणाखाली आणतात. परंतु प्रत्यक्षात मन इंद्रियापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे, बुद्धी मनापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे आणि आत्मा इतर सर्वांपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. म्हणूनच कठोपनिषदात म्हटले आहे की ज्याच्या बुद्धीचा सारथी विवेकी आहे, ज्याच्या मनाचे लगाम नियमानुसार त्याच्या नियंत्रणाखाली असतात, त्याचे इंद्रियाचे घोडे देखील सर्वोत्तम घोड्याप्रमाणे नियंत्रणाखाली असतात. आणि अशा मन, बुद्धी आणि इंद्रियासह शुद्ध आत्मा त्या परमपदाला प्राप्त होतो, जिथे गेल्यानंतर तो परत येत नाही. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.